সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, সমস্ত হত্যা, সমস্ত অন্যায়ের বিচার আমরা করব। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায় দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনাদের জানমাল, এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করেন, দয়া করে আর এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা যদি আমার কথা মতো চলেন, আমাদের সাথে যদি একসাথে যদি কাজ করি আমরা, নিঃসন্দেহে আমরা একটা সুন্দর পরিণতির দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারব। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য করেন। মারামারি করে এই সংঘাতের মাধ্যমে আমরা আর কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো না, আর কিছু আমরা পাবো না। সুতরাং দয়া করে আপনারা সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ, সমস্ত অরাজকতা, সমস্ত সংঘর্ষ থেকে বিরত হন এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হব। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে, প্রতিটা অন্যায়ের বিচার হবে। আমরা আজকে সুন্দরভাবে কথা বলেছি, সমস্ত দলের প্রধান দলের নেতারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি ওনাদের ইনভাইট করেছিলাম এখানে, ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন, অ্যান্ড আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদের কিছু সময় দেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। আপনারা আর এই সংঘাতের পথে যাবেন না এবং শান্তি শৃঙ্খলার পথে ফেরত চলে আসেন। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের লোকজন মারা যাচ্ছে। তো এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনারা আমাকে সাহায্য করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ। வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா நாட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டார், ராஜினாமா செய்துவிட்டார் என ராணுவ தளபதி தெரிவித்திருக்கிறார். சற்று நேரத்திற்கு முன்பாக அந்நாட்டின் ராணுவ தளபதி வாக்கர் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார். அதில் மக்கள் அனைவரும் வன்முறையை கைவிட்டுவிட்டு அமைதி காக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார். மேலும் வங்கதேசத்தில் இடைக்கால அரசு அமைய ராணுவம் உதவி புரியும் என்றும் பேசியிருக்கிறார். வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா நாட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டார், அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார் என்று ராணுவ தளபதி வாக்கர் தெரிவித்திருக்கிறார். வங்கதேசத்தில் இந்த 30% இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக தொடங்கிய போராட்டம் பெரிய அளவில் வன்முறையாக வெடித்திருக்கிறது. அங்கு பெரிய அளவில் கலவரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா பதவி விலக வேண்டும் என மாணவர்கள் ஏராளமானோர் அங்கு பேரணியிலும் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டிருந்தனர். இந்நிலையில் வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா நாட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருந்த நிலையில் அதனை அந்நாட்டு ராணுவ தளபதி வாக்கர் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்.